Hello everyone, I am Neelam, founder of Poonam Academy. I am here to give you the MCQs of chapter number 1, class 10, The Rise of Nationalism in Europe. आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न करें. These are the most important questions for the board point of view. Now let's start. LE, the measuring unit in Germany, was used to measure. Yes. आंसर इज क्लोथ. ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है. राइट नाउ बोलिवेरियन स्टार्टेड इन 1834 इन प्रूशिया वाज क्या था? आंसर इज बी, कस्टम यूनियन. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द सेंट्स, एंजल्स एंड क्राइस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन? क्या सिंबलाइज कर रहे थे वो? Answer is B, fraternity among nations. Now, question number 4. Who were called the Junkers? This is the most important question. ये 1 mark में आपका आ सकता है. So, answer is B. Large landowners were called the Junkers. Now, question number 5. Which treaty recognized Greece as an independent nation? Answer is A. Treaty of Constantinople 1832 recognized Greece as an independent nation. Right? Now, question number 6. By which of the following treaty was the United Kingdom of Great Britain formed? Answer is B. Great Britain के केस में क्या था? Act of Union. Okay? Now, question number 7. Which of the following group of powers collectively defeated Napoleon? किसने डिफीट किया था? ऑस्ट्रिया, रूसिया, रशिया एंड ब्रिटेन. आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. रोमांटिसिज्म वाज अ क्या था? कल्चरल मूवमेंट, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर आल्सो. तो आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following type of government was functioning in France before the French Revolution of 1789? Answer is D. Monarchy. Louis XVI था, as you all know, as you have read in the 9th class also. Now, question number 10. Which of the following country was considered as a cradle of European civilization? Definitely Greece था. ठीक है. Now, answer is C. 11th question. Nationalism which emerged as a force in the late 19th century means? Yes. Answer is A. Strong nationalism means strong devotion for one's own country and its history and culture. Right? Now, question number 12. What is the correct definition to define the term plebiscite? Plebiscite. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये लर्न करना है. आंसर इज डी. प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट होता था जिसमें जो सिटीजन्स होते थे एक रीजन के, उनको बोला जाता था या तो आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या फिर आप क्या करो, रिजेक्ट करो. तो ये एक तरह की डायरेक्ट वोटिंग होती थी. राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following country did not attend the Congress of Vienna? Answer is Switzerland. Answer is D. Now question number 14. The first slogan of French Revolution which gave the clear idea of nationalism with its 4 words liberty, equality and fraternity कहाँ का था ये? As you all know, answer is D. French Revolution. Now question number 15. The French revolutionaries declared that the mission and destiny of the French nation was क्या था? Answer B. To liberate the people of Europe from despotism. Despotism मतलब from the king rule, from the monarchy rule. Okay. The civil code of 1804 in France was usually known as Napoleonic Code. This is most important question. Okay. 17. The Napoleonic Code was exported to which of the following regions? Answer is C. जो भी regions किसके control में थे? Under the French control. Right? Now question number 8. Question number 18. The liberal nationalism refers to answer number A. Freedom for the individual and equality before the law. Okay? ये हमने चैप्टर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है, इसमें मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी जिससे आपको इजी रहेगा नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा चैप्टर रिवाइज करने में. वर्ड टू वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी से. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. Who formed the secret society called the Young Italy? Answer is B. Giuseppe Mazzini. Right? ठीक है.
Now question number 20. The term universal suffrage refers to, answer is B, the right to vote for all the adults, because universal means applicable for all and suffrage means right to vote. लेकिन उधर क्या था, उस केस की अगर हम बात करें तो वहां पे किसके लिए वो लोग वो कर रहे थे, यूनिवर्सल सफरेज क्या मतलब रखता था, क्या मीनिंग रखता था, राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. Who said when France sneezes the rest of the Europe catches cold? This is very important question. Answer is Metternich. Okay, answer is D. Now question number 22. Who was the important figure in the unification of Germany? Answer is B, Otto von Bismarck. कौन थे ये? Prussian chief minister, right? Now 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended with B. Answer is B, Prussian victory. क्योंकि किसने इनिशिएटिव लिया था? प्रूशिया ने. Okay. Now question number 24. Who proclaimed the Emperor of Germany in 1871? Answer is D, Kaiser William I of Prussia. क्योंकि प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया था. ठीक है. Now question number 25. Who became the king of Italy in 1861? Answer is B. क्या है B? Victor Emmanuel II. Okay. Now question number 26. The allegory of the German nation who wears a crown of oak leaf was a जर्मन नेशन की जर्मेनिया आप याद करेंगे, जर्मन से ही जर्मेनिया आपको वर्ड याद आना चाहिए. ठीक है. दिस इज अगेन अ मेमोरी टेक्निक, जर्मन से जर्मेनिया, राइट. आंसर इज डी. A large part of Balkan region was under the control of, किसके अंडर में था? Answer is B, Ottoman Empire, Turkey, right. Now this is over from my side. If you like my content then do subscribe my channel, hit the like button, hit the bell icon and do share this video with your friends ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, आपको भी और अपडेट मिल पाए. मैं और भी आपके लिए MCQs और रिवीजन सीरीज में ये चल रही है, मैं और भी आपके लिए बाकी चैप्टर्स का भी आपको एक्सप्लेनेशन और MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.